I welcome you all on the second session of 10 Days Faculty Development Program on the topic Understanding Issues of Research Publication in UGC Care Journal. As you all know that the vision of Council of Professional Teacher Development Council is to let's connect and collaborate to empower teacher. And as we all are aware that the research and innovations are the prime indicators of any country's advancement, and being a teacher or the teacher educator, it is our responsibility and accountability to contribute towards the research. And the UGC has also directed all the universities and the colleges in the country to appoint and promote faculty members on the basis of care list of approved journal, so as to focus more on the quality of research work. And even the NEP 20 has also put an unprecedented thrust on the research component. So let's continue with the purpose of this FDP, that is understanding issues of research publication in UGC care journals. And the topic for the day today of FDP is quality indices of research publication. So for the today's opening address, I would like to request our respected Professor Gopal Krishnan Thakur sir, advisor of Research Circle of Council of Teacher Professional Development and the President of Social Development and Research Foundation. Sir is working as a Dean, School of Education and School of Management in the Mahatma Gandhi Antarashtriya Vishwavidyalaya, and the Professor as Head of Department of Education and the Department of Psychology in the Mahatma Gandhi Antarashtriya Vishwavidyalaya. So I request our respected sir to kindly proceed with the opening session. Over to you, sir. Thank you, Dr. Jugnu. With the onset, again, I would like to welcome all our honorable members of CTPD and SDRF, and with the zeal and kind of enthusiasm that we have embarked on this journey of research circle. It's really encouraging to see people sparing their time, even on Sundays, to gather online and to have deep and sincere deliberation on the research-related issues and different academic issues that we have dealt with. So for today's session, we have with us, as you have already said, Professor Vishal Sood. He is a brilliant educationist in today's arena all over India. He is recognized in all Indian universities and abroad for his kind of intellect and brilliance in terms of academic and research work that he has been doing. And that's why I had in mind to invite him to share his thoughts and views and works with all of us, so that the purpose, as you have already stated, that when the faculty members all across in educational institutions particularly are concerned about what kind of research work to be done and what kind of research papers and articles to be written and where to get it published, a very serious and sincere concern we have been experiencing, and lots of undesired phenomenon is also taking place. So amidst all these confusion, we have to look forward to doing better work in terms of research and getting our research work published in better places, better journals, with good indexes, good indices, and like Scoopers, H-Index, and other papers are there, other journal categories are there where we can get it published and we get proper recognition, avoiding malpractices. So that's why I do believe Professor Vishal Sood will be throwing light on these areas and where to get it published, what kind of research papers should we write, what should be the approach of getting recognition in terms of publications and all that. So with this note, I again welcome, and I would extend my heartfelt thanks to Professor Sood. He has been discharging the responsibilities of
a dean and head of School of Education, Department of Education in Central University of Himachal Pradesh, as well as the registrar of the same university, and we can understand the responsibilities and its related pressure and time constraints. So amidst all, Professor Sood has so kindly spared his time to be with us on this occasion. So my heartfelt thanks and gratitude to him. And I, with this note, I would request Professor Sood to begin with the thing, or else Professor Dr. Jugnu. Is Professor Sood is the next speaker, or someone else to take the lead? You can Yes, go sir. ahead. Yes, sir. Professor Sood is the next speaker. So thank you so much, sir. And moving further, without taking much of your time, let me take the privilege of introducing our expert speaker and resource person for the today, Dr. Vishal Sood, Professor and Dean, School of Education, Central University of Himachal Pradesh. And he's also currently holding the additional charge of Registrar of Central University of Himachal Pradesh. Prior to this, he has also served as a professor of education in HP University, Shimla. And he was also worked with the School of Education, IGNOU, New Delhi as lecturer. And he has a total of 21 years of rich experience in teacher education and 15 years of research supervision experience. He is a gold medalist in MPhil from Himachal Pradesh University, Shimla. And he has also guided 1 postdoctorate scholar in education and 8 PhD research works, more than a dozen research works at MPhil level, and more than 65 research works at MEd and MA education level. And he has also completed 1 research project and presently supervising 6 PhD research works in education. And he has published around 70 research papers in various journals of national and international repute, and also published 3 books and 25 chapters in different edited books. He has also presented around 75 papers as participants in seminars and conferences and delivered more than 170 lectures as resource person or experts in different seminars, workshop, or the refresher course. In addition to his credit, he has also got 22 psychological tests published from National Psychological Corporation, Agra, and 1 psychological test from Prasad Psychological Corporation, New Delhi. Sir has also produced video lectures from the platform from NIOS, IGNOU, which are available on YouTube, and also telecasted on the Swamprabha channel on the teacher education. Sir is the research co-advisor of SSA, Government of Himachal Pradesh, and presently also a member of Executive Council of Central University of Himachal Pradesh. Sir is also a member of Departmental Advisory Board in Curriculum Studies Department of NCERT, New Delhi. And Sir is also a review panel of Impress ICSSR and UGC Stride for evaluating research project proposal. With this, sir, we are really blessed to have you with us. And now I request our resource person for the today to kindly proceed with the session. Over to you, sir, Professor Vishal Sood, sir. Thank you, sir. Please join us. Thank you. Very good morning to all those who are here on this virtual platform of this today's FTP Faculty Development Program being organized by Council for Teachers Professional Development and Social Development and Research Foundation. Good morning to all, and first of all, thank you to Professor Gopal Krishna Thakurji, the advisor to CTPD and the president of SDRF and Dean School of Education, Mahatma Gandhi Antarashtriya Hindi Vishwavidyalaya, for inviting me, for giving me opportunity to be on this platform to discuss with you on research publications and quality indices. Thank you very much, Professor Thakur. Professor Satyendra Gupta ji, the Dean of School of Education, Galgotias University, Greater Noida, and National President of CTPD. Professor Tanya Gupta, the Dean of School of Education, KR Mangalam University, Gurugram and North Zone President of CTPD. Dr. Sanjay, the Program Director of SDRF, and Dr. Jugnu Bhatia, the moderator for today and the social media head of CTPD. Thank you very much for inviting me.
Now, without wasting much time, I will start with this research publications. You all are experienced, you are all engaged in publication of many papers or many articles in different journals or magazines or newspapers. And it's really where to publish, what to publish, and how to publish, what things are to be kept in mind. That initial comments from Professor Gopal Krishna Thakur ji have that ignited that fire, that where we should go for publication. And it's really a tough work for we people as a teacher, that in which journals we should publish, go for publication. We will talk about that. Actually, there will be no that particular presentation, PowerPoint presentation, but I'll keep my points very that you can say very precise and very clear and very straightforward, that where we should go for research publication. So now, first of all, when we talk about research publications, the first thing is that before talking about these quality indices of research publications, it is firstly necessary, I think, that we should talk about the academic integrity. That is more important, because these where to publish, what to publish. The first thing is the academic integrity. The second is the unethical and the deceptive practices which are presently in vogue, which Professor Thakur was also talking about, that there are the journals which are predatory in nature, and responsible conduct of research. See, what I'm saying is responsible conduct of research. Not I'm talking about researcher particularly or the research supervisor. Responsible conduct of research. How we are conducting research. So these three things. First, we should talk about this. We should have clear idea about this thing, that what is academic integrity? What are the unethical practices and deceptive practices? And what we mean by responsible conduct of research. If you see National Education Policy 2020, it talks about around 16 times in that document of NEP 2020, around 16 times it talks about the value-based education, value-based practices, not only at school level, but also at higher education level. Now that value-based education or ethical ethics or the code of conduct for teachers, why it is talking about and why this much important, 16 times in a document, it talks about that. Why it is so? Because that actually emphasizes on the academic integrity, the ethics that we as a teacher, we as a researcher, we as a research supervisor, we need to follow. Now see, when we talk about the topic for today's deliberation is quality indices of research publications. From where these research publications will come? First question is this. From where these research publications will come? These will come from the research work which we are going to conduct or which we have conducted. The publications will come from that. And if that research will be poor, the output will naturally be poor. So the thing is, we have to improve the research. We need to improve the research. We need to improve the conduct of the research. And if the research will be improved, the output of that will be improved. And for improving the quality of the research, the quality of research supervision is important. We need to improve the quality of research supervision. Now, research and research, think about the research which we have conducted during this COVID-19 era. The research is conducted during COVID-19 era, during that 1.5 year or 2 year span, how that research was conducted. Think about that. That needs a serious thought. And how that research supervision was carried out during that stage. And you won't imagine that during those 2 years or 1.5 years, more number of PhDs were awarded during that time rather than in the normal times. Now see how it happened. That means there is a big question mark on the
research, the conduct of the research, and the research supervision. So publications, when we talk about publications or the quality of publications or the quality indices of the research publications, we must go first for, that is the integrity of the researcher, the integrity of the research supervisor, the quality of the research supervisor, and the quality of the research supervision. How that research was supervised. If that all will be okay, the publications will be better. Now, I can quote you one example, a recent example. I was working with my research student, PhD students, and that girl was working particularly on a research paper on Vedic mathematics. And she has already that framed everything of methodology part, that research questions, research objectives, the research method, the sampling part, even the tool that was, and the research. Even we have analyzed the data table, the data have been tabulated, it have been interpreted. Now only the left part was the discussion of those findings, and the initial part of the introductory part and the review part in the research paper. Then I said, you just go for one thing, that you start writing on discussion of findings, and also write on this initial part, that is introductory. And she came after 1 or 2 days to me, and with 1.5 or 2 pages on introductory part, and 3-4 pages on that 3 pages on discussion part. And then I directly said, apply spelling and grammar check on computer. And after applying that spell check and grammar check on computer, just put this material in Turnitin. And when she put that material, only that material, the introductory and the discussion part, 4 or 5 pages. And I said, give me the report of plagiarism. And you won't imagine, now I'm showing you the tendency of the researchers, today's researchers. That was approximately 63% plagiarism was there. And that was mostly in the introductory part. And in the discussion part, where she has discussed the findings or contradicted or supported her findings with the previous findings. So that was. Then I said, now keep these pages, 5 pages aside. Now start writing. What ideas you are having, what you have written in this, just bulleted points, write on a page. These are the bulleted points, and I just started giving her those dictations. Just now start writing. And what I did is I gave her 2 pages dictation for introductory part and 4 pages of discussion part dictation. And then I said, now apply spelling and grammar check, and now go for Turnitin for plagiarism check, anti-plagiarism check. And when she put that material into those dictated pages, those the ideas were those, but they were put in own words according to what we need. Then at that stage, when we went for that plagiarism check on Turnitin, it was merely 7%. Now see, and that 7% is out of when that 7% was analyzed, that where this software is talking about this plagiarized material, then 5% was that which is not acceptable to we people, just like it was taking, hence the hypothesis. Those words, these softwares also take away, strongly agree or agree, these typical words. So only the 2% that plagiarism was there, that wordings were from the NEP document, 2020 document. So 2% was there. So now see how we go for conduct of research, how we write those, how we go for academic writings, how we go for writing of research papers. It is more important. When we will conduct research in a proper manner, the research supervision will be in a proper manner, then we should go for the publication. So first condition is, that is the academic integrity of the researcher, the academic integrity of the research supervisor. Now, when we talk about academic integrity in research, 3 things are mostly there, and those 3 things is fabrication. We see in research that there is fabrication of data.
Fabrication of data, that is making up or cooking of data, not collecting data, not going into the field, not conducting the experiments, and without going into the field or without conducting the experiment, what we do, we directly cook the data or make up the data. These are the tendencies. Some researchers do these, even some research supervisors. And it has happened in last 10 to 15 years that this has happened. This fabrication of data has taken place at a larger level. Then second is the falsification of data. That is manipulating the outcome. Rather than going for fabrication of data or not collecting the data, data are collected, the experiments are conducted, the field work is carried out. But when it comes to the generation of the outcomes, then at that time, those outcomes are manipulated. The results are manipulated. So that is falsification of data. So it should also be avoided. It needs to be avoided if you want to improve the quality of the research publications. Plagiarism check. Now, plagiarism means that is appropriation of others' ideas or their processes or their thoughts without giving credit to them. When we just directly pick up that material, put that into our research without giving the credit to the original persons, that is plagiarism. And the original author or original researcher, that is he or she is not being given like that kind of credit which should be given to him. So I think that should be avoided. How to avoid that plagiarism? That I quoted one example, that instead of writing exactly what previous authors or previous researchers have done, go for the ideas. Your ideas will also be there, your judgments will also be there, and how you write that in an objective manner, in your own words, how you interpret that, that is very important. So when we we go for this, if this is this will be fine if the research will be conducted in a better way, if the research supervision will be carried out in a better way. Definitely the publications that I won't say publication, I will say manuscripts. The manuscripts that we will prepare, they will be of high quality. And when these manuscripts will be prepared and we will go for the publication, then we talk about those now what to do, how to go for publication. We should now see to that. Now, when we talk about academic this integrity, then what are those good practices or good ethical practices? That is collecting data ethically, going to the field, or taking due account of those peer researchers, or giving credit to the previous researchers. These are all the things we should talk about. Good administrative practices. Even we should not go for falsification of data or copying text from others. We should not go for that. Even publishing the same data, we should not go for that. Understatement of other researchers, sometimes it happens. What the other researchers have said, we take the idea, but not in our own words, but we understate those ideas of other researchers. Negligence in referring to the others' findings, that may be a reason. So these things need to be avoided if you want to improve the quality of the research, the quality of the research outcomes, and when it will be developed. And these are the ethical practices. These are the ethical practices which are to be imbibed by we people. We all are teachers. But I have been informed by Professor Thakur that we are all are teachers working in colleges or working in universities. So we are the research supervisors or we are the researchers. So we should think about these things. We need to think about these things, how to go for conducting of research and how to go for supervision of research. And these things are to be obeyed by we people. These things are to be followed by we people first. And if we as a research supervisor will follow these things,
our students will also follow those things. They will also imbibe those things in their behaviors, in their actions. So that is first and foremost thing for improving the quality of the research and for improving the quality of the research publications. Now it comes to this where we should publish now. Okay, we have conducted the research. We have conducted it in a better way. The supervision is good. The research has been conducted in a better way, and its quality is okay. It's fine, and we have also went for that plagiarism check, and it's fine with also that. Now the next step comes is going for publications, going for research publication. With see, we are researchers. One thing I want to share with you. You will agree to that. We are researchers. We are not typists. We are not technically those qualified or very much those you can say like computer professionals or computer technicians. No, we are not like that. We are researchers. देखिए आज एक मैं इसको इसलिए आपसे बात करना चाहूंगा. कई बार ये बोला जाता है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज, नो डाउट कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बट जब हमें रिसर्च करनी है तो हमारा जो माइंड है वो रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर, हाउ इट इज बीइंग फोकसिंग, वी आर फोकसिंग ऑन दैट, हाउ वी आर फोकसिंग ऑन दैट रिसर्च, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. नाउ आजकल के रिसर्चर क्या कर रहे हैं, पहले ये होता था वी ट्राई टू राइट द पेजेस, व्हाट कम्स टू आवर माइंड, हम लिखते थे उसको और उसके बाद उसको चेक करने के बाद देन वी वेंट फॉर टाइपिंग और गोइंग फॉर डाटा एंट्री और समथिंग एल्स और मेकिंग टेबल्स और एनालाइजिंग डाटा ऑन आवर ओन मैन्युअली. अब क्या हो रहा है, आप स्टूडेंट को बोलिए कि इसके ऊपर एक पेपर लिख के लाइए या 2 पेजेस लिख के लाइए या कोई थीमेटिक या कंसेप्चुअल पेपर लिख के लाइए, वो गूगल पे जाएगा, वहां से कॉपी पेस्ट करेगा, उसकी सीक्वेंसिंग भी करेगा, नहीं करेगा नो गारंटी, और आपके सामने वो 4 पेजेस ला के रख दे. तो ये जो वी आर नॉट टेक्निकल प्रोफेशनल, दिस नीड टू बी डिस्करेज्ड. एज ए रिसर्च सुपरवाइजर हमें अपने स्टूडेंट को इस चीज को डिस्करेज करना है. एंड व्हाट आई डू इज, जब मेरे स्टूडेंट मेरे सामने मेरे रूम में होते हैं बैठे हुए, मैं उनको ये बोल देता हूँ कि अपने लैपटॉप बंद करो. अगर आपको कोई काम दिया जा रहा है, गो फॉर मेन्यू, लिखो, क्या होगा, गलत लिखेंगे, करेक्ट करना सुपरवाइजर का काम है. लेट द आइडियाज कम फ्रॉम विद इन, लेट द आइडियाज कम फ्रॉम विद इन, लेट देम राइट. दे विल राइट रॉन्गली, दे विल राइट हाफ करेक्ट, हाफ इनकरेक्ट. It's our role is to correct them. It's our role is to give them more ideas, more refined things, and think about that particular issue critically. That's our role as a research supervisor. So we should be very clear in this, on these lines, that we are not computer professionals. We are not there to analyze data, that we know how to feed the data in computers, how to apply the software. No software is better than the human mind. Human mind is the best software for conducting research. There are many softwares for these data analysis, particularly qualitative data analysis. And I hear from students that this is a software for analyzing qualitative data, perception-based data, interview-based data, analysis through computer. I'm surprised that how a computer can analyze the emotions. Because when we collect data through interviews or through observations, many emotions come along with those data, those views, those perceptions, those opinions. Emotions come along with that. Can those emotions be analyzed through a computer? No, it's the human mind that can analyze that. So how to go for analysis? So first thing is improve the quality of the research. Now after improving the quality of research, you have done a good research, it comes to us that how to go for publication. Now there are different databases. Now suppose you are writing a paper. There are different databases from where you will
get whether researches have been carried out in that particular area or not, or so we have different databases, just like Web of Science is there, Web of Knowledge, or WS or WOK, we talk about that. Then Scopus is there, Scopus database, or Science Direct is there. You can have those previous researches, and these are the big databases. See, two things are there, databases and indexing. In when we talk about publication, databases will help us in collecting those previous studies, or having an idea that what has already been carried out and what needs to be carried out, or what are the research efforts across the globe in that particular area. So there are different databases. Scopus is there, Science Direct is there, Google Scholar is there, Microsoft Academic is there, Sightseer, Elsevier ka Sightseer is there, Worldwide Science, WWS is there, Semantic Scholar is there, for these medical related publications, PubMed is there, and sometimes we find good experimental studies in PubMed. How the true experimental studies are conducted. These medical people, or these people in the field of pharmacy, and they conduct true experimental studies. Because in education field, it's not possible to go for true experimental designs. We go for mostly for quasi-experimental designs. So then JSTOR is their journal storage. Education Resources Information Center, that is ERIC, is there. So these are different databases. Now, databases actually different research papers, or which have been published across the globe. These are compiled over there. These are compiled over those databases, and we can have those ideas. Now, it comes that when we talk about databases, have certain unique features. That means they include a good number of freely accessible, and some of the databases are freely accessible. Some databases, they give you only the abstract part. Some databases give you the full accessibility. They are free and open source software are also there. So these are different databases which you can consult for collecting those data. And now, when we talk about indexing, you have collected that data from those databases. You have prepared a research paper. You have prepared a research article based on previous researches that you have collected from these databases. Now you want to go for research publication, or you have collected primary data from the field. You have collected primary data from the field, you have analyzed the data, you have prepared a paper by following all the ethics, all the norms. Now you want to get your paper published. Now the thing is indexing. Whether the journal which you are selecting for publication is indexed or not. So indexing, it is means whether the journal has some registration or not. So some of the common index features or criteria. When you will go for publication in a journal, what you should note down? First is, every journal should have ISSN number. International Standard Serial Number should be there. First thing is this. Second is DOI for all articles. Digital Object Identifiers. DOI should be there. Now see, although this is said that DOIs should be there, I have a different opinion also on this. There are many initially, now within the last 4 or 5 years, there has been a gradual change in functioning of many research journals, or the publication of many research journals. Just like I am taking example of a journal of NIPA, National Institute of Educational Planning and Administration. I am taking example of journals of NCERT, National Council of Educational Research and Training. You go 4 or 5 years back, in ये जो journal थे, चाहे NIPA का journal है, चाहे NCERT का School Science है, Indian Education Review है,
या जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन है, ये जितने भी जर्नल थे they were available only in print form, having no DOIs, although ISSN number was there, but उनकी जो क्वालिटी थी, उनका जो पीयर रिव्यू प्रोसेस था, that was of high quality, वो बहुत हाई क्वालिटी का था, लेकिन DOI नहीं था। नाउ क्या हम ये बोल सकते हैं कि DOI से ही किसी की क्वालिटी, किसी जर्नल की क्वालिटी का पता चलेगा? इज इट सो? So where to publish, what things are to be kept in mind while selecting a particular journal, this we require. So DOI is there, that means that journal is having a good quality, or it is having a mechanism. Actually then there should be editorial board page with names, who are the members of editorial board page. Then what are their titles, or to which institutes or organizations they belong to, those editorial board members. Then what is the peer review process? In how much time that peer review will take place, and in how much time you will be informed about that your paper will be has been accepted for publication. You have seen, आपने ये देखा होगा many times. You submit a paper, and after half an hour you are getting an email that yes, your paper has been reviewed and it has been accepted for publication. The thing is, Harsha Merchant, I'm seeing your message. I have informed yesterday, actually was not able to prepare the PPT on account of this, that in state of Himachal Pradesh we have just model code of conduct day before yesterday implemented due to assembly elections. And I was busy yesterday with the official works as a registrar, because we have interviews day after tomorrow in the university. So we had to deal with election commission also yesterday, so was not able to prepare PPT. So I think as a researcher, you are the teachers, you should exercise this one thing, that is the hearing sense. I think that is more involved in today's session rather than visual sense. So that's the limitation of today's session also, but you should go for that. So peer review policy. What is the peer review policy? In how much time you will be informed as an author or as a researcher that your paper has been accepted for publication, or what will be the publication schedule? Then what is the copyright or IPR policy of that particular journal? What about that? And basic article level metadata, how to facilitate. So these things are included in indexing. Whether a journal is indexed or not, you should go for these things: ISSN, DOI, editorial board page, and the peer review policy is this, and what is their copyright or IPR policy. So that indexing you must go for that. Now it comes, what is the impact factor of journal, or what is the impact factor of your paper or journal that we talk about? IF, impact factor, research metrics. These are the research metrics. See, what is the impact factor of the journal? We sometimes go for this, but as in my advice is, as initial researcher at the initial stage, we should not go for very high impact factor journal as initial researcher. आप लोग भी अपने students को का research supervision करते हैं. Don't force initially those students to select high impact factor journals initially. Initially, go for those journals which are listed, which are indexed journals, so that because those students are initial researchers. If we will force them, if we will pressurize them, because they still do not have much research skills with them, or academic writing skills are not so properly developed among them. So firstly, we should develop among them, those students, those researchers, initial researchers, novice researchers, that how to go for writing, how a paper is written. Initially, those papers may be published in impact factor that may be less having less value, and gradually then
when their quality will be improved, gradually then advise them or suggest them to go for high impact high impact factor journals, that is JIF or this. Now impact factor and journal impact factor, when we talk about these things, impact factor is for a paper and journal impact factor is for the whole journal. Now when we talk about this impact factor or this, now how this impact factor is calculated? Impact factor is calculated, that is जैसे मान लो अभी का कोई 2022 का जर्नल है, तो 2021 और 2020 का जो पिछला 2 साल है, करंट ईयर से पिछले 2 साल देखे जाते हैं और उसमें ये देखा जाता है कि उस जर्नल में पिछले 2 साल में कितने पेपर पब्लिश हुए। पहले तो ये पिछले 2 सालों में उन जर्नल्स में कितने पेपर पब्लिश हुए, और उसके बाद इस साल में उन पेपर्स के लिए जो पिछले 2 साल में पब्लिश हुए, उसके लिए अगले 2022 में जो है वो कितनी साइटेशंस हुई। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि एक कोई जर्नल है एक्स और उसका 2021 और 20 में 40 पेपर पब्लिश हुए हैं। मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूं, 40 पेपर्स हैव बीन पब्लिश्ड ड्यूरिंग 2020 एंड 2021 इन ए जर्नल एक्स, ठीक है। And in 2022, for all those 40 papers, all 40 papers have been cited, suppose 60 times in different researches. 60 times in different researches. So the impact factor will be 40 divided by 60. Now 40 divided by 60 means that is 2 by 3. 2 by 3 means 0.66. So impact factor of that journal will be, for the year 2022 will be 0.66. This is the formula for calculating the impact factor, journal impact factor. Now see, अब इसमें एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। इसमें भी देखिए वो जो हम बोल रहे हैं ना इंटीग्रिटी की बात, विशाल सर एक क्वेश्चन था यहाँ पर मेरा जी। आपने 40 पेपर्स का बताया और 60 टाइम्स साइटेशन बताया उनका जी। अगर साइटेशन इंक्रीज होता है तो इम्पैक्ट फैक्टर तो कम हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ, वो एक पेपर का मैं बता रहा हूँ, एक पेपर नहीं का मैं मतलब साइटेशन डिवाइडेड बाय पेपर्स हो या पेपर्स डिवाइडेड बाय साइटेशन हो, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है आपसे। हाँ 60 by 40, सॉरी। हाँ वही कह रहा हूँ ना मैं, वो मिसकोट गलत कोट हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये और दूसरी एक और चीज, जो हम इम्पैक्ट फैक्टर की रेंज लेके चलते हैं, इसमें भी ना एक हमारा जो क्राइटेरिया है दैट इज नॉट फिक्स्ड, कि कितना माना जाए कितना नहीं माना जाए, दैट इज ऑल आर्बिट्रेरी। दैट फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ 2, द आर्टिकल्स पब्लिश्ड 1 or 2 year prior have been cited twice in the current year। तो कई चीजें जो है वो इसमें वो भी आती हैं। और एक और नया ट्रेंड चला है और वो बहुत मतलब जिसको बोलते हैं क्वेश्चनेबल है। सपोज डॉक्टर संजय हैं, इन्होंने एक पेपर कोई पब्लिश किया है और ये क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आज की इस एफडीपी में 40 लोग हैं और 40 को ये जानते हैं, तो ये बोल देंगे 40 को कि ऐसा करना यार, मेरा पेपर ना, अपने पेपर में आप लिख रहे हो तो कोट कर देना, साइड कर देना। नाउ होगा क्या कि इनका पेपर हम साइट कर देंगे अपने पेपर में, इनकी साइटेशन बढ़ गई, साइटेशन इंडेक्स इनका बढ़ गया। तो ये भी एक तरीका जो है वो चला हुआ है अपना साइटेशन इंडेक्स बढ़ाने के लिए, कि आप जिनको जानते हैं आप उनको बोल दो कि ये मेरा पेपर है, अगर आप कोई पेपर लिखोगे, आर्टिकल लिखोगे, उसमें अपना मेरा पेपर का नाम साइट कर, तो साइटेशन इंडेक्स ऑब्वियस है बढ़ जाएगा। ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। दूसरा एक ट्रेंड और अनएथिकल प्रैक्टिस शुरू हुई है, और खासकर ये हुई है जो ये स्कोपस इंडेक्स हैं, या जो एक और चीज में इसमें मैं बोलना चाहूंगा, दैट इज कि बोलते हैं पब्लिश एंड पेरिश। मतलब वो पे एंड पब्लिश वाला जो है, जो कि एक ट्रेंड चला था, वो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अभी भी स्कोपस इंडेक्स्ड जर्नल्स या जितने भी आपके ये और इसमें जो माने जा रहे हैं, उनमें भी ये ट्रेंड शुरू हो गया है। देयर आर मेनी स्कोपस इंडेक्स्ड जर्नल्स जो एक पेपर की पब्लिकेशन की फीस जो है वो लाख में भी लेते हैं।
1-1 लाख रुपया भी जो है वो जिनकी पब्लिकेशन की फीस है, हालांकि वो उसको पब्लिकेशन का नाम नहीं देते, पब्लिकेशन फीस का वो किसी और नाम से उसको लेते हैं, दैट दीज आर द चार्जेस। और उसमें हो क्या रहा है, सपोज आई हैव रिटन अ पेपर and that has been accepted by Scopus Index Journal, and they will say that now it has been accepted, you just submit itna amount, 1 lakh or 1,10,000. Now what I will do, I will say to my colleagues or my known people that yes, if you want a paper in Scopus Index, my paper has been accepted, be a co-author with me in that paper, and you will have to pay this. So what I will say, I will take 15 people and they will pay 10,000 to me. Now what I have earned is 1,50,000, and my charges I have to pay to that journal is only 1 lakh. So my paper is also published and 50,000 I am also earning. This trend has also been started, and this is a big thing on integrity of the researcher. There was a question that what is the difference between peer reviewed and UGC care listed? See, peer review is a policy adopted by the journals, and if that peer review policy is clear, that how that peer review, will it be a blind peer review or this how much time it will take for review of the papers, that peer review policy is there. Those and UGC care listed journals are those for which UGC has created a mechanism to include only those journals which are high quality journals, and for that UGC care journals, UGC has given that mandate to Savitribai Phule Pune University. There that analysis of those journals is being carried out, whether that journal is to be included in the, suppose some of you is working in a college and you have your own college journal, and you want that that's a peer reviewed journal, suppose peer reviewed journal, your college journal, you want that it should be included in care list. So what is to be done? First, you need to send that journal to your affiliating university to which your college is affiliated, the IQAC cell of that university, and that journal is to be sent not by the college, rather by the IQAC cell of the college. IQAC cell will recommend that this is a high quality journal, and that IQAC cell of your college will send that, will forward that with the recommendation, that recommendation to the affiliating university. Affiliating university IQAC cell, the IQAC cell of the affiliating university will evaluate that journal, will assess that journal on the basis of the quality parameters decided by the university in accordance with the UGC guidelines, in accordance with the UGC care guidelines. Those guidelines are there, and then IQAC cell of the university will recommend that journal to the UGC. And 4 universities have been given the mandate to do this. Tezpur University in Northeast India, Savitribai Phule University is analyzing all those journals, the quality of those journals, and then UGC will forward to one of those concerned 4 institutes which have been mandated for evaluating those journals. And after getting proper and that you can say appropriate assessment report from that institution, those 4 mandated institutions, that journal will be included in the care list. So this is a mechanism that has been developed by UGC. One question I was seeing here, that some UGC care listed journal or this peer reviewed journals are not having those DOI numbers. See, आज अगर आप देखें इंटरनेट के ऊपर बहुत ऐसे जर्नल्स हैं, स्टिल बहुत ऐसे जर्नल्स हैं जो फेक हैं, जो अपना DOI फेक लिख रहे हैं, या जो अपना ISSN इवन फेक लिख रहे हैं. आपको उसकी स्कैनिंग अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी. आप क्या उस जर्नल की अपनी वेबसाइट है? क्या उस जर्नल का अपना जो है एडिटोरियल बोर्ड है? क्या उस जर्नल की अपनी रिव्यूअर पॉलिसी है? ये सारी चीजें आपको स्कैन करना पड़ेगा. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, या जिसको मैं बोल सकता हूं देयर इज
नो जादू की छड़ी नहीं है, मैजिक स्टिक नहीं है कि आपको रिसोर्स पर्सन या मैं या गोपाल कृष्ण ठाकुर जी या प्रोफेसर सत्येंद्र गुप्ता जी जो है वो डायरेक्टली बता देंगे कि यस दिस इज द जर्नल एंड दिस इज फाइन. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. You need to scan every journal. If you are going to publish, you need to scan whether yes, it's fine, we can go for this journal. Now, when we talk about this, sometimes there are different things. Author level matrices are there, H index, G index, citation index, research gate score. I'm not, see, I earlier said that we are not technicians, we are researchers, we are academicians, we are educationists. Our main focus is to go for conducting and supervising high quality research. And after conducting the research, we need to go for publication. And at the time of publication, we need to scan this thing, whether that journal is appropriate. It is an indexed journal or not. Is it available online or not? If it is not available online, then whether that journal is printed, what is the circulation policy of that, how many copies are being circulated of the printed versions. So all these things are to be kept into consideration while selecting a journal. Now what criteria should be there? See, yahan pe kuch questions beech mein aa rahe the, I am answering also along with that. What should be the criteria for journal selection? First thing, जो आपने रिसर्च वर्क किया है, do the aims and scope of the journal match those your research work? कि जिस जर्नल में आप पब्लिश, आपने देखा कि yes this is the journal, whether that journal is having the same aim and objective which your research work is having. Is there similarity in that? It needs to be examined, it needs to be verified. Suppose the journal is on educational technology, Journal of Educational Technology, I am giving an example, and you are writing a paper on the philosophy of Swami Vivekananda and its relevance in today's education system, and you are sending that paper to Journal of Educational Technology. Do it like that? No. Whether the aims and objectives of that journal match with your research work or not. और इसके लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, जर्नल का होम पेज पे जाइए, होम पेज पे वहां पे अबाउट द जर्नल, एम्स एंड स्कोप वो होता है, आप उसको पढ़िए, गो फॉर दैट. और ये जो इंफॉर्मेशन है अबाउट द जर्नल और अबाउट द एम्स एंड स्कोप, इट विल हेल्प यू टू डिटरमिन वेदर योर रिसर्च will be a good fit for the journal or not, whether your research work will be a good fit for journal or not. The scholarly journals, they are diverse in terms of the content and audience. When we talk about scholarly journal, when we talk about quality journals, they have a diverse audience, and these scholarly journals actually they address specific content. आपने कई ऐसे जर्नल देखे होंगे, उसमें आपको फिलॉसफी का भी पेपर मिल जाएगा, उसमें आपको टेक्नोलॉजी का भी पेपर मिल जाएगा, उसमें मेडिकल लाइन का पेपर भी डाल दिया हो. व्हाट इज दिस? ये कोई ये नहीं है. दैट इज merely pay and publish policy those journals are following. Those are predatory journals. Predatory journals are those which compromises with that quality of research, which compromises with the scholarship. That means what knowledge we want to give or to disseminate, that is being compromised by such journals. And they do not care whether this paper belongs to medical field, whether this paper belongs to philosophy, or it belongs to psychology, or it belongs to some other field, or economics. They just accept the paper, ask the researcher or the author, just submit the money and we will publish your paper. That is pay and publish policy they are following. They are compromising with the quality of this. So while publishing a paper in a journal, the criteria for the journal selection should be whether that journal, its aims and objectives match with the research that you have conducted or not. And some journals may be having specialization or disciplinary focus can be there of some journals, that yes, this journal will focus or will publish only these
types of papers. Then second thing you must note while publishing a paper in the journal or selecting a journal, that is whether similar papers which you have which you are going to publish, the article or the paper, whether that journal publishes papers or articles of same nature or not. Just see the previous issues in the archives. Those previous issues will be there. Just scroll those previous issues, see what kind of papers, what kind of nature of papers are being published in that journal, and if such kind of paper which you have prepared, if those kind of paper or such nature of papers are being published, you can go for that. So this is to be also to be noted. Then what are the journal's submission requirements? What are the submission requirements? Then there is information for authors or information for submitting a manuscript. It is written in that website. So what type of research study they publish, submission outside journal scopes, journal scope, they will say that they will be directly rejected. Then there will be guidance regarding how many words should be there in an article or in a paper, what should be the word limits, how to give those tables or figures in the paper. So those guidelines, submission requirements are there, what should be the font size, also go for that. Then who are the journal's intended audience? That means how that journal is being circulated either online or offline in any way. But what are the intended audience? Whether it is an internationally acclaimed, if it's online, it is having DOI, it may be having its circulation across the globe. So that means a better readership, a larger number of readership will be there. So journal quality, you can see whether a journal is having a quality or not, how many readers or how many circulations are there. Then journal's impact factor, obviously these are the journal metrics, research metrics, that is journal impact factor, high quality impact factor is there. Then when we talk about impact factor, one more thing is there are many different organizations which are giving that this is the impact factor. They are computing those impact factors. But you must have seen in UGC guidelines that they are mostly depending on Thomson's. That is, or Scopus impact factor calculated by either by Scopus or those Thomson impact factor, that only will be counted. Otherwise, there are many, just like you can have different different agencies are there who are involved in calculating the impact factor. So don't go for such impact factor being calculated by these organizations which are not being recognized by these UGC or our this. But one thing that I advised you earlier, that I suggested you earlier, in the beginning, go for those journals which are even having low impact factor, no issue. That will build our skills, that will build our idea, that will develop our horizon, how to go for writing of a good research paper. I remember 2005 or 6, I sent one paper and at that time there was no this journal impact factor or this peer review and this, nothing was there at that time in 2005 or 6. I sent one paper, and that paper that was from South India, and that journal was being published, and they have a number of journals in engineering field, in technology field, in education field. I sent one paper to Journal of Educational Technology, and that was available online at that time. See, that was available at that time online also. And after 2 or 2.5 months, I got a review. And that review was not merely a form that
just a casual review. No, it was a very rigid review. My paper, which I have sent to them, my paper was assessed on 10 parameters, and on those 10 parameters, my each that I was assigned a rank. That out of 10 marks on this parameter, you are given 7, you are given 8, you are given 5, you are given this. And in the last, there were qualitative feedback that you improve these things. You have not cited these in the references part. You just improve these things. And then after reviewing, after revising, modifying your paper, you just submit it again. Then I revised that, I modified that. And after modification, then I got a mail from them that yes, now your paper has been accepted for publication. And at that time, no amount was taken by them. Not even a single penny. That now, although there was no impact factor at that time, but that was the thing, that how we can go for selection of the research paper, and where this publish and pay policy is followed. Just pay and publish, and within 1 day or within half an hour you are getting in this message, getting a message that your paper has been accepted. So this. Another thing that you should keep in mind while selecting a paper, that is peer review. What is the journal's peer review process? How the papers are reviewed. It needs to be seen. Then you should also go for what are the red flags, what are the indicators that put a question mark on that particular journal. You need to think critically. Just we should not go blindly for selection of any selection of a research journal. And see, there are certain common factors that are there which can lead to rejection of a manuscript. Suppose there is duplication in that, insignificant results are there, discussion is not properly done, or superficial treatment is there, or manuscript style that you have developed that manuscript, but it is not as per the journal guidelines. So these are the things that you should keep in mind while selecting a journal. And when we talk about this predatory journals, those are they generally go for those plagiarized work or copied work, low quality work, and their titles or websites of standard journals, they are hijacked. Some journals are giving that name, international journal of this, global journal of this. Don't we should not जिसको हम बोल सकते हैं कि हमें उससे ये नहीं देखना चाहिए कि इंटरनेशनल वर्ड लगा है या तो बहुत अच्छा जर्नल होगा. No, go to the website, check everything, and compare it with the UGC care list. Then we should go for that. So sometimes there are journals there where there are no details of the publisher, no details of the editors. You just आप समझ जाओ कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है. Lack of information. Sometimes there are journal. आप पेपर भेज दो, हो जाएगा publish. That means it's a quarterly journal. It's a quarterly journal, but they are publishing it each month, writing quarterly. Now, whosoever knows, who knows that whether it is published in January or February or March, but they are saying it is quarterly. So these things are to be checked, and peer review process, peer review policy is not there. High acceptance rate is there. You just send a paper, and within 5 minutes you are getting email. Your paper has been accepted. Just go to site and submit this piece. Then false impact factor or indexing databases are also there. कई तो डेटाबेसेस ऐसे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, बस लिखे हुए हैं जर्नल. इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आई एम कोपरनिकस, आई एम गिविंग वन एग्जांपल, कोपरनिकस डेटा दिस फॉर कैलकुलेटिंग इम्पैक्ट फैक्टर.
and this is not recognized anywhere, Copernicus. And in many journals you will see index by Copernicus, impact factor by Copernicus. It is not recognized. So we should be very precautious about these things when we go for publication of this. And these are actually the hijacked journals or cloned journals. And crony publishing is there. And if you want to just identify those predatory journal, whether this is a predatory or not, ISSN check करिए, editor और publisher का address check करिए, impact factor को verify करिए, journal citation JCR, Clarivate Analytics का journal citation report है. ये अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, Clarivate Analytics का journal citation report JCR, उसके साथ आप इम्पैक्ट फैक्टर वेरीफाई कर सकते हैं. आप यहां पे एक क्वेश्चन आया था कि हम इम्पैक्ट फैक्टर का कैसे पता लगाएं. तो इम्पैक्ट फैक्टर, मान लीजिए सम जर्नल इज क्लेमिंग दैट इट द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ दिस जर्नल इज 5.4. नाउ यू वांट टू वेरीफाई दैट सो दैट टू नॉट टू बिकम अ विक्टिम ऑफ फ्रॉड. आप इसको, तो आप क्या करिए, क्लैरिवेट एनालिटिक्स के जर्नल साइटेशन रिपोर्ट में उस जर्नल का नाम डालिए, देख लीजिए कि उसका है इम्पैक्ट फैक्टर 5.4 की नहीं, पता लग जाएगा. तो वहां से आप चेक कर सकते हैं. इंडेक्सिंग डेटाबेस कि वो जर्नल किस डेटाबेस में इंडेक्स्ड है. जैसे मैंने बोला, बहुत सारे डेटाबेसेस हमारे पास इस टाइम है. वेब ऑफ साइंस है, स्कोपस है, गूगल स्कॉलर है, माइक्रोस्कोप एकेडमिक है, साइटसीयर है, सेमेंटिक स्कॉलर है, JSTOR है, एरिक है. बहुत सारे हमारे पास डेटाबेसेस हैं. नाउ वेदर जिस जर्नल में आप पब्लिश करने जा रहे हैं, वेदर दैट जर्नल इज इंडेक्स्ड इन डेटाबेस और नॉट, इन विच डेटाबेस दैट इज इंडेक्स्ड, यू वांट टू नो दिस. सो आप पहले, सपोज दैट जर्नल इज सेइंग दैट इट इज इंडेक्स्ड विद माइक्रोसॉफ्ट स्कॉलर, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक. You go to Microsoft Academic, put the name of that journal in Microsoft Academic database, you will come to know कि whether वो जर्नल वहां इंडेक्स्ड है कि नहीं, वो लग जाएगा आपको पता. अब जैसे मैं अगर बात करूं, गूगल स्कॉलर या एग्रीगेटर्स, लाइब्रेरी कैटलॉग्स, ये इंडेक्सिंग डेटाबेसेस नहीं है, ये भी हमें पता होना चाहिए. गूगल स्कॉलर इज नॉट ए इंडेक्सिंग डेटाबेस. Scopus is a indexing database. Web of Science is a indexing database. Then editors and the publisher and editor and editorial board members, whether they their credibility. What is their credibility? Whether they now sometimes it happens कि एक researcher को कैसे पता होगा कि ये जो editor है इसके या रिव्यूअर हैं, ये इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है. बट यू कैन सी फ्रॉम देयर डेजिग्नेशन, यू कैन सी फ्रॉम देयर अफिलिएशन. सपोज अब मैं बात करूं, प्रोफेसर सत्येंद्र गुप्ता जी हैं या प्रोफेसर गोपाल कृष्ण ठाकुर जी हैं, इनके साथ ये होगा कि डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन दिस गलगोटिया यूनिवर्सिटी या डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय. तो आप उस डेजिग्नेशन से और उस इंस्टीट्यूशन से पता लगा सकते हैं कि यस, ए पर्सन इज सिटिंग ऑन सच ए हाई पोजीशन, सच ए हाई स्टेटस ही इज हैविंग, ही इज अ क्रेडिबल पर्सन फॉर रिव्यूइंग और फॉर एडिटिंग द पेपर or reviewing the papers. So that in that manner you can check the credibility of the editors. Then always check dates of submission and acceptance of the manuscript. आपने पेपर कब सबमिट किया और एक्सेप्ट कब हुआ, उसमें अगर बहुत टाइम गैप जो है वो कम है, समझ जाओ कि दिक्कत है. बहुत जल्दी अगर वो हो रहा है, पेपर रिव्यू प्रोसेस जो है वो बहुत टाइम लेती है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. I received papers from Sage Publications for reviewing. Sometimes for first time review, sometimes for when जब 2-3 reviewers के बीच में मैचिंग नहीं होती है. मान लीजिए 3 reviewers को उन्होंने पेपर भेजा सेज वालों ने, और उसमें से 2 reviewers ने बोला कि ये ठीक नहीं है, एक ने गलत, तो फिर वो एक और रेफरी को भेजते हैं. तो वैसे भी कई बार पेपर आते हैं, कई बार डायरेक्ट फर्स्ट टाइम रिव्यू के लिए भी आते हैं. सो व्हाट आई हैव सीन देयर
वंडरफुल। और देखिए व्हाट गिव टू अस एज ए रिव्यूअर, मुझे क्या मिलता है? नो मनी, नथिंग, बट आई गॉट असेस, आई जनरली receive assess for 60 days to all the SAGE publication, and that's a benefit to my students, research scholars. I'll give them password, I'll give them ID, and I'll say now you go for this SAGE, and you can download the papers if you want, if it is related to your study. So that's a benefit to our students. But how to go for that reviewing? So I have seen their publication time, when the paper was submitted, when the paper was first reviewed, when the paper was edited, and it takes around 5 to 6 months or more than that for publication of a paper. So that's a good time. And if वहां पे टाइम ही नहीं है कि आज पेपर सबमिट कर रहे हो और 10 दिन के बाद आपका एक्सेप्टेंस हो रहा है, समझ जाइए कुछ ना कुछ वहां पे है। आप जर्नल के आर्काइव्स चेक करिए, बैक वॉल्यूम्स क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, कितने बैक वॉल्यूम्स चले, उससे भी आप पता लगा सकते हैं। देन समटाइम्स कुछ जर्नल्स जो है वो अपने रिव्यूअर्स के नाम भी दिए होते हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट पे, हु आर देयर रिव्यूअर्स, and they continuously regularly update their reviewers, not a single list कि जी एक बार रिव्यूअर 10 लोग हैं यही रिव्यू करेंगे, no, they every time review change the reviewer panel. That's also a thing which needs to be checked. और इसमें अगर हम ये बोले तो मतलब ये चीजें हमें ध्यान रखनी है जब हमने पब्लिकेशन के ऊपर जो है वो जाना है। और इसमें सिर्फ इंडिया में ही इनिशिएटिव नहीं हुए हैं, जैसे यूजीसी केयर लिस्ट की हम बात कर रहे हैं तो और अगर आपने क्रेडिबल जर्नल सिलेक्ट करने हैं तो एक think.check.submit ये जो है इसमें जर्नल फाइंडर्स करके है, और जर्नल फाइंडर जो एल्सेवियर का है या स्प्रिंजर जर्नल सुजेस्टर, स्प्रिंजर जर्नल सुजेस्टर है, और विले का जर्नल फाइंडर है, जॉन विले का। आप इसमें देख सकते हैं कि क्रेडिबल जर्नल्स कौन से हैं। एल्सेवियर का जर्नल फाइंडर, स्प्रिंजर का जर्नल सुजेस्टर और विले का जर्नल फाइंडर, इसमें आप देख सकते हैं। फिर इसके साथ साथ इंडिया के अगर हम बात करें तो यूजीसी केयर लिस्ट, और वो अपडेट होती रहती है कंटिन्यूअसली। और इवन यूजीसी ने 2 डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिश किए हैं, एक उसमें से है एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड रिसर्च पब्लिकेशन। एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड रिसर्च पब्लिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, यूजीसी ने पब्लिश किया है, और एक डॉक्यूमेंट यूजीसी ने ही गाइडेंस डॉक्यूमेंट 2020 में पब्लिश किया था, गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिसेस के नाम से। आप इन 2 डॉक्यूमेंट्स को जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से हम जर्नल पब्लिकेशन की सिलेक्शन, जर्नल सिलेक्शन करनी है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है। यू कैन गो फॉर दैट। वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव्स भी बहुत हैं अराउंड द ग्लोब, जिसमें कोप है यूनाइटेड किंगडम का, कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, देन मीट्रिक टाइड है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर्स वेम है। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव जो है वो हुए हैं। कैबल्स स्कॉलरली एनालिटिक्स है, बट ये कमर्शियल है, जिसमें आप क्रेडिबल जर्नल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैबल्स स्कॉलरली एनालिटिक्स, ये तो इन चीजों से आप जो है वो अपना कौन सा जर्नल आपने सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं, उसको आप देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी जो है कि जर्नल सिलेक्शन में हमें अलर्ट रहना है, और शुरुआत जो है वो ऐसे जर्नल से करें चाहे उनका इम्पैक्ट फैक्टर लेस भी हो, लेकिन हमें एक, या हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो एक आइडिया हो हाउ टू गो फॉर एकेडमिक राइटिंग, हाउ टू गो फॉर पेपर राइटिंग। वो जब तक नहीं होगा, जब तक वो स्किल धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप नहीं होगी, वी कैन नॉट से दैट कि कोई पेपर एक्सेप्ट नहीं हुआ, फिर अदरवाइज वही होगा पे एंड पब्लिश वाला। तो इसलिए हमें उससे जो है वो अवॉइड करते हुए, और धीरे धीरे जैसे क्वालिटी बढ़ेगी हमारी राइटिंग की, अपने आप हमारे स्टूडेंट्स का या हमारा पेपर जो है वो अच्छे जर्नल में। और हमेशा ये सारी डिपेंड चीज करेगी हमारी रिसर्च की क्वालिटी पे, हमारी रिसर्च करने की क्वालिटी पे, रिसर्चर की क्वालिटी पे, और रिसर्च सुपरविजन की क्वालिटी। सो दैट इज वेरी एसेंशियल।
हमारी एकेडमिक इंटीग्रिटी, हमारी रिसर्च इंटीग्रिटी, दैट इज मोर एसेंशियल. वी शुड नॉट गो फॉर falsification or fabrication or plagiarism, rather than the original thoughts that should come from within, and that should be in black and white. That should be converted into black and white, and they should be then revised, modified. That is like that. We should go. We can go for publication. So this is all from my side regarding research publications and how to go for quality of research publications. Thank you very much once again for a patience hearing, patience listening, and thank you Professor Gopal Krishna Thakur ji, Professor Satyendra Gupta ji, Professor Tanya Gupta ji, or Dr. Sanjay and Dr. Bhatia, the today's moderator, for inviting me once again. Thank you very much, and now over to you. Thank you. Thank you so much, sir, for your valuable, knowledgeable, and enriching session. And I hope all the participants are benefited by this information. And now it's a time for question answer round. And I request all the participants to please write your questions in the chat box, or you can simply raise your hand. If you have any questions, you can ask. जिग्नू में क्वेश्चन आया था चैट बॉक्स में इससे जी। पहले, विशाल सर से पूछना चाहूंगा मैं जी कि सर। सर जैसे आपने कहा कि डीओआई, तो डीओआई जर्नल का जैसे ले सकते हैं, तो क्या इंडिविजुअल पेपर का भी लिया जा सकता है, और ये खाली ऑथर के लेवल पे भी लिया जा सकता है, या जर्नल के लेवल पे एडिटर से DOI जो है वो इंडिविजुअल पेपर का, वो दैट्स जो है, अगर हम इसकी बात करें जो DOI की जब हम बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर की उसको क्या डिजिटली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें जनरली ये होता है कि कई बार क्या है कि DOI पूरे जर्नल का है और उसमें फिर उन्होंने सारे पेपर जो है वो उसमें कंपाइल कर दिए होते हैं, और कई बार जो है वो सिंगल भी होता है, हर पेपर का DOI जो है वो जर्नल ने, और जिसने हर पेपर का अलग अलग किया होगा, दैट विल बी कि वो जर्नल ज्यादा उसके ऊपर एफर्ट कर रहा है ताकि उस पेपर को जैसे हम कीवर्ड्स की बात करते हैं कि कीवर्ड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वैसे ही DOI से अलग अलग, या आप पूरे पेपर का फिर उसमें सारी आपकी लिस्टिंग होती है। जी। दूसरा सवाल सर इसी में था एक, कि ये ऑथर के लेवल पे भी कभी इंडिविजुअली हो सकता है या पब्लिशर साइड से ही होगा हमेशा? ये पब्लिशर के लेवल से ही होगा। अच्छा, ये पब्लिशर के लेवल, ये पेड होता है या फ्री होता है अगर हम कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, से? ये वही करेंगे, आपका इसमें नहीं है वो, मैं वही बोल रहा हूँ। एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आजकल एक और ट्रेंड चला है कि मेरा पेपर स्कोपस में हो गया, एक्सेप्ट हो गया, मुझे बोल दिया कि आप 80,000 दो या 1 लाख दो, अदरवाइज मैं सिंगल ऑफर हूँ। अब मुझे पता है कि मैं 80,000 या 1 लाख नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं आपको बोलूंगा, मैडम भाटिया को बोलूंगा और 4 लोगों को कि आपका नाम डाल देता हूँ, आप मुझे इतना पे कर दो, आपका पेपर स्कोपस में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑथर जो हम ये बोल रहे हैं कि वो पेमेंट को किसी भी नाम से, ऐसा नहीं है कि वो वहां पे नहीं हो रहा है, स्टिल इट इज हैपनिंग, बट एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो उनका जो जिसको आप बोल सकते हो कि सर्कुलेशन या जिसका जो असेस है, डिसेमिनेशन है, दैट इज एट ए ग्लोबल लेवल। लेकिन मेरा इसमें मानना ये है कि अगर आपने रिसर्च अच्छी की है, जो इनिशियल स्टेप है, इनिशियल स्टेप अगर आपका अच्छा है, और प्रॉब्लम एक्चुअल वहीं पे आ रही है कि हम डेटा के साथ मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम डेटा के साथ या रिजल्ट्स के साथ मैनिपुलेट कर रहे हैं, और फिर हम ये मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाई लेवल जर्नल में जो है, क्वालिटी जर्नल में ये पब्लिश, एंड ऑब्वियस है जब वहां पे उस तरह की रिपोर्ट आएगी तो फिर वो पेमेंट के लिए भी बोलेंगे, और एक दूसरा ये प्रमोशन के साथ जब से इसको ज्यादा लिंक कर दिया, उससे भी थोड़ी सी दिक्कतें जो है वो आई हैं, अगर मैं कैटेगोरिकली बोलूं। विशाल सर एक और क्वेश्चन, इतनी ज्यादा जो बाढ़ थी, मैं अगर 2004 या 5 से पहले बात करूं तो जर्नल्स की कोई ऐसी पेपर पब्लिकेशन की कोई बाढ़ नहीं होती, लेकिन उसके बाद फ्लड आया,
क्यों? क्योंकि उसके बाद ज्यादा इसको लिंक कर दिया गया। और दूसरा एक कारण जो हम टेक्नोलॉजिकली और ये इंटरनेट की वजह से ज्यादा मतलब साउंड हुए, उस वजह से भी ये हुई है, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग बढ़ी है, क्योंकि लोगों ने अपने पेपर जो भी पब्लिश हुआ उसको नेट पे डालना शुरू किया, देन इट कन्वर्टेड कि इसको क्यों ना एक सिस्टमेटिक रूप, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में लाया जाए, और वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में फिर इन जर्नल्स ने, इन डेटाबेसेस ने लाना उसको शुरू। जी विशाल सर, एक ये मेरा क्वेश्चन है, मतलब अभी तक तो जो मैंने पूछे जो इधर उधर चैट बॉक्स में थे, कि आप और गोपाल सर तो काफी लंबा एक्सपीरियंस है आप लोगों का एजुकेशन में। क्या आपको लगता है कि जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, सब अच्छे रिसर्चर्स हो सकते हैं? और अगर नहीं हो सकते देखिए मैं तो जी हाँ जी सर, आप बताइए फिर मेरा। हाँ नहीं, आप कंप्लीट करिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो जैसा एपीआई की जो प्रेशर है और जिसके चक्कर में फिर ये चोरियां होती है, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं, तो क्यों ना एक अल्टरनेट ऑप्शन, जैसे हम कहते हैं ना चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, तो फैकल्टी को भी बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे कि भाई अगर तुम्हारे रिसर्च पेपर्स नहीं है तो तुम इस फील्ड में अच्छा हो, तुम कम्युनिटी वर्क में बहुत अच्छा हो, कहीं ऑप्शंस एपीआई में मिलने चाहिए, जिससे कि ये जो ब्लंडर कहूंगा जो हो रहा है रिसर्च में, काफी हद तक मेरे ख्याल से मिनिमाइज होगा। देखिए इसमें अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है कि एक टीचर जो है वो रिसर्चर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है टीचिंग और रिसर्च को हम सेपरेट नहीं कर सकते। रिसर्च को हम इस टीचिंग और रिसर्च को मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये रिसर्च वो दैट इज नॉट लाइक दैट जो रिजिड सी रिसर्च, ये रिसर्च है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी रिसर्च होती है। बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, हाउ टू मेक देम अंडरस्टैंड what are the problems they are facing, why they are not understanding, whether am I not able to reach to those students, whether the content is difficult or my teaching methodology is different. This is also a question for research, although it doesn't require कि कोई ऐसी रिसर्च की जाए जिसको डॉक्यूमेंट किया जाए, उसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाए जाए, नो, दिस इज जस्ट लाइक एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो वहां पे अगर हम उस एक्शन रिसर्च के मामले में बोले, या मान लो मेरे कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए क्या है एज ए टीचर, सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, मेरे नेबरहुड में कुछ गलत हो रहा है, मेरे गांव में कुछ गलत हो रहा है, हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ दोज प्रैक्टिसेस, अगेन सोशल एक्शन रिसर्च। सो उसको हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, रही आपकी दूसरी बात कि किसी का इंटरेस्ट रिसर्च में नहीं है, खासकर ये जो डॉक्यूमेंटेड रिसर्च है, ठीक है, आपकी कमेंट, नो डाउट उसमें वो चीजें आनी चाहिए, और जो टीचिंग से जुड़े हैं वो आने चाहिए। और शायद अगर आप देखें तो ये जो नैक की मेथोडोलॉजी है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल की, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठे कि आप एक कॉलेज जो दिल्ली का है और एक कॉलेज जो हिमाचल में है, किसी इंटीरियर एरिया में, you are applying the same norms for those two colleges for grading them. अब देखिए ये NIRF का अगर हम लोग पैरामीटर्स हैं इवैल्यूएशन के, वो कुछ और है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के, नैक के कुछ और है, और हमारे पास इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन, इतने डाइवर्स इंस्टीट्यूट्स पड़े हैं, डाइवर्सिटी इंडिया में है, वी कैन नॉट गो विद अ सिंगल I that this is the thing and it should be there in the institute. So it's not like that. Similar case with the API, although many improvements have taken place in API right from its introduction in 2009, many taken place, but still there is scope for improvement in that. Still there is scope for improvement. So that research papers or some other things should be added, which are the part of the teaching job, teaching profession. So can I add something? Please. संजय जी, जी सर। हाँ, मैं प्रोफेसर विशाल सूद जी की बात में थोड़ा सा एक आध बात और जोड़ देना चाहता हूँ। अमेरिकन यूनिवर्सिटी सिस्टम में ये बहुत ही एक्सप्लिसिट है वैसे कि जब अपॉइंटमेंट होता है फैकल्टी का, तो वो रिसर्च पोजीशन है
या टीचिंग पोजीशन है या खास परसेंटेज, इतना कंपोनेंट रिसर्च और इतना कंपोनेंट टीचिंग, इस तरह से भी उनके प्रोविजंस हैं। तो वहां तो वो सिस्टम काम करता है। हमारे यहाँ प्रोफेसर विशाल सूद जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जितना हम एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, एकेडमिक कंट्रीब्यूशन, उसमें अगर हमारे में एक सर्टेन क्वांटम तक रिसर्च इंटरेस्ट या रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं रहेगा, तो हम जो एवरीडे चेंजिंग डायनेमिक नेचर है नॉलेज का, उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे और फिर हम स्टैग्नेटेड नॉलेज ट्रांजैक्ट करते रहेंगे, जो पहले के जमाने में कभी होता था। पुराने नोट्स पड़े होते थे और उसको जाकर के हम पढ़ाते थे, वो एक अलग। तो एक सर्टेन लेवल पर तो हर टीचर को रिसर्चर होना चाहिए, ये बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने बात कही ना कि वो, जैसे हमने अभी अमेरिकन यूनिवर्सिटी सिस्टम का एक उदाहरण दिया, तो अभी एक छोटी सी चेष्टा की गई है। आप लोगों ने अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये दस्तावेज देखा होगा, तो उसमें चर्चा की गई है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस सेटअप किए जाएंगे, उसमें रिसर्च इंस्टीट्यूशन जिसका कि एम्फेसिस रिसर्च पर रहेगा, वो भी अलग से सेटअप किए जाएंगे। और टीचिंग के तो हैं ही, और इसको और भी आगे एनरिच किया जाएगा। तो यह एक छोटा सा प्रयास है जो आपकी उस क्यूरियोसिटी को एड्रेस करता है। और अगर यह प्रयास थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो, लेकिन वो वाले जो रिसर्च होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि उसके सारे के सारे आउटपुट और रिजल्ट्स वो सभी एवरीडे क्लास टीचिंग में हमारे काम आए। डेफिनेटली उसके लिए हमारे रेफरेंसेस होंगे और कोऑर्डिनेट्स होंगे जिसको हम यूज कर सकते हैं। पर जहां तक टीचिंग से रिलेटेड रिसर्च स्टडीज की बात है और खोजने की बात है, अन्वेषण करने की बात है, तो उसके लिए तो फिर हर टीचर में उतना एप्टीट्यूड तो होना ही चाहिए। बाकी फर्दर रिसर्च, मेजर रिसर्च, और उसके लिए शायद जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसने जो एक इनिशिएटिव लिया है, तो देखिए आगे चल करके शायद इससे कुछ रास्ता दिखे। ये एक एडिशन था जो मैं प्रोफेसर विशाल जी के बातों में और अपनी तरफ से जोड़ना चाहता था। धन्यवाद। डॉक्टर प्रोफेसर तान्या जी हैं सामने में, और शायद वो कुछ बात करना चाह रही थी, पूछना। जी सर। प्रोफेसर विशाल जी, आप जो बात कर रहे थे पूरा, आई वाज वेरी इंटेंटली लिसनिंग टू इट। बस एक पर्सनल ओपिनियन है विच आई वांट टू शेयर। मैं आपके पूरे इस सेशन में सोच रही थी कि हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं, और साथ साथ में हम कमर्शियल एस्पेक्ट की भी बात कर रहे हैं। सो इट्स अ स्टेट ऑफ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इफ आई वुड से, क्योंकि एक तरफ हम क्वालिटी चाह रहे हैं और एक तरफ हम बाजारीकरण कर रहे हैं चीजों का। सो अब बिल्कुल आपने सही बोला कि जो पैरामीटर्स हैं असेस करने के, या मैं एक जैसे भी सर ने बोला कि हर टीचर के अंदर एक कंपोनेंट या एलिमेंट ऑफ रिसर्चर होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली रिसर्च इज identification of problems and finding possible solutions. That is the simplest understanding of research. And problems हमारे अपने ही इर्द गिर्द बहुत सारी हैं, तो चाहे उसको आप एक्शन रिसर्च के फॉर्म में करें या अप्लाइड करें, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि फंडामेंटल रिसर्चेस बैकसीट ले चुके हैं। And that is why maybe the revival of liberal programs and maybe more kind of basic and fundamental researches. मेरा सर सिर्फ एक ये it's an extension to what you're saying is कि somewhere जब तक हम honestly speaking इस rat race में रहेंगे जहाँ पे टीचिंग या क्वालिटी रिसर्च बैकसीट लेके सिर्फ हम क्वांटिटेटिव होते जाएंगे, I believe that till we remain quantitative we cannot achieve quality, and इस क्वांटिटी की वजह से ही हम कमर्शियल हो रहे हैं। सब एथिक्स की बात करते हैं, बट कितना ज्यादा एथिकल प्रैक्टिसेस करना पॉसिबल है और हो पा रहा है, दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच एवरीवन हैज टू कंटेम्पलेट. दैट इज वन ओपिनियन ऑफ माइन सर. एंड सेकेंडली आपने बहुत सही बात करी कि जो साइटेशंस होनी चाहिए पब्लिकेशंस में, और एपीआई भी इस समय पे इम्पैक्ट फैक्टर को बहुत स्कोरिंग देता है. सो समवेयर आई थिंक
if I'd like to conclude here, my viewpoint is that जब हमारे आज के समय में जो इतने सीनियर एकेडमिशियंस हैं, उसमें सर भी हैं सामने, प्रोफेसर ठाकुर भी हैं. You know, a few days back we were having a session, we were having an award function of CTF also. So not to personally name, so we always have so many people to look forward, जिनको हम आज भी पढ़ते हैं. पढ़ते क्या, उनका रिसर्च पढ़ते हैं. तो क्या सिर्फ एक इम्पैक्ट फैक्टर या एच इंडेक्स, आई इंडेक्स, जी इंडेक्स, इन सब से ही क्या एक रिसर्चर की बेहतरीन उसकी क्वालिटी को देखा जा रहा है? क्या जो हमारे पाइनियरिंग एजुकेशनिस्ट रहे हैं वो तो नहीं करते थे ये सारी चीजें? तो क्या उनकी रिसर्चेस अच्छी नहीं थी? मुझे एक्चुअली ये समझ आज भी नहीं आता कि हम where are we going? You know, I think we are completely in a global market, which is forcing us, all of us, to do things to participate in this rat race, if I would say, or a maddening race, if I would say that. That is just my personal viewpoint, but thank you so much. It has been a wonderful session hearing. Thank you, sir. बिल्कुल आपने भी सही कहा. और दूसरी चीज, एक मुझे लगता है इसमें ना इम्प्रूवमेंट भी आ रही है. अभी यूजीसी इट इज अभी नोटिस नहीं हुआ, वो जो पीएचडी स्कॉलर्स के लिए 2 पेपर मैंडेटरी हैं, दे आर डूइंग अवे कि अब नहीं हो सके. ये चीज रियलाइज हो रही है और ये आपकी बात सही है. मैं अगर बात करूं, मैं, प्रोफेसर ठाकुर या आप हैं या सत्येंद्र हैं, अगर हम कहीं इस टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करें, वी विल नॉट बी एलिजिबल, वी विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड. इट्स डेफिनेट only due to this the system that is presently followed for shortlisting of candidates. So at our time हमारी +2 की परसेंटेजेस होती थी 70%, 60%, 80%. इससे ऊपर बहुत रेयर होता था परसेंट. आज के जो स्टूडेंट निकल रहा है उसका 95%, 98%. And then when they go for calculation of that API, on the basis of that for assistant professor, they will go to the highest side. Now that means जो आप बोल रहे हैं कि क्या हम लोगों में वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, या पुराने केसेस में उनकी जो रिसर्चेस थी जिनका एच इंडेक्स या आई इंडेक्स या जी इंडेक्स कुछ भी नहीं था, नहीं कैलकुलेट हुआ, क्या उन्होंने वो हाई क्वालिटी रिसर्चेस नहीं थी? तो ये धीरे धीरे इसमें ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हो रही है. और नो डाउट हम जिस इसमें रह रहे हैं वो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी. तो इकोनॉमिक फैक्टर जो हैं वो भी आज के वर्ल्ड को है वो चैनलाइज कर रहे हैं, और वो फैक्टर कहीं ना कहीं एजुकेशन में पड़े, हमें उसको भी एडमिट साथ में करना ही पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर कहीं ना कहीं आएगा, और क्योंकि उसी से चला हुआ है सब कुछ. तो नॉलेज और नॉलेज बेस्ड सोसाइटी या नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी हम बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज. लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि जो पुरानों ने जितना काम किया जाता है वो आज के काम से बहुत बेहतर काम, बहुत बेहतर उसमें, क्योंकि उसमें वो कंपोनेंट नहीं था कि मेरा पेपर पब्लिश होगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगी. वहां कंपोनेंट ये था कि मेरा पेपर पब्लिश होगा तो मेरा जो नॉलेज है या जो मेरा नाम है वो जाएगा. वो नाम के लिए पेपर पब्लिश होते थे उस टाइम. आज नाम के लिए पेपर पब्लिश नहीं हो रहे, आज उसके लिए है कि मुझे प्रमोशन मिलेगा या मेरा इतना एपीआई स्कोर बनेगा तो मैं शॉर्टलिस्ट हो जाऊंगा, ये होगा वो होगा, उस चीज के लिए. दूसरा एक आपने जो दूसरी बात इंटीग्रिटी की बात, दैट इज एट हाईली एट पर्सनल लेवल. मैं क्या उस इंटीग्रिटी को फॉलो करता हूं कि नहीं करता हूं, दूसरा मुझे नहीं सिखा पाएगा. लेकिन अगर मैं फॉलो करता हूं तो मैं ये चाहूंगा कि मैं अपने से भी वही चीज सिखाऊं जो मैं फॉलो कर रहा हूं, और अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा तो राइट, आपने ठीक कहा वो चीज. तो काफी चीजें जो है वो हमारे हाथ में है. उसके आगे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे या पॉलिसी मेकिंग लेवल पे क्या होना है, वो किस तरह से भी जा रहे हैं. कई बार ये भी देखा जाता है किसी को बेनिफिट पहुंचाना है तो क्या करना है.
अपने लेवल पे हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, या अगर हम एज ए इंस्टीट्यूशनल हेड हैं वो हम क्या कर सकते हैं, वहां हमारी इंटीग्रिटी जो है वो काम। जी, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में है प्रोफेसर आरती काचरू मैम का। क्वेश्चन भी लग रहा है मुझे और ये कुछ सजेशन भी लग रहा है। देयर आर ओनली टीचिंग और ओनली रिसर्च यूनिवर्सिटी इन द वेस्ट, इवन एनईपी हैज सजेस्टेड द सेम इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो गोपाल सर जो आप कह रहे हैं जी, एनईपी 2020 में 3 तरह के इंस्टीट्यूट दी गई है। University primarily focus on teaching, and the secondary focus on research universities, which will mainly focus on the research activities, and their secondary emphasis will be on teaching. It doesn't mean कि इन दोनों यूनिवर्सिटीज में टीचिंग में ज्यादा फोकस होगा, दूसरे secondary focus होगा। Third will be the autonomous colleges, और वो ग्रेजुअली 2035 तक जो है वो बोला गया। वेस्ट में ये कंसेप्ट प्रोफेसर गोपाल कृष्ण ठाकुर जी बोल रहे थे, और ये कंसेप्ट इवन इंडिया में भी है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में या हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटीज जो हैं इस कंसेप्ट को फॉलो करती है। वहां पे क्या है कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट की पोस्ट अलग होती है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट की, और जो टीचर्स हैं वो अलग है। तो जो साइंटिस्ट है वो सिर्फ उसमें एक्सपेरिमेंटेशन में लगे हैं, उनका काम वही है लेबोरेटरी वर्क का, उनको टीचिंग का काम नहीं दिया हुआ है। और जो टीचर्स हैं उनके पास फिर वो उस तरह का ज्यादा रिसर्च का, लेबोरेटरी का या फिर का काम नहीं है, उनके लिए टीचिंग का काम जो है वो इस तरह का सिस्टम एग्रीकल्चर में इंडिया में भी है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, फॉरेस्ट्री की यूनिवर्सिटीज में है, वो भी है। फिर इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताऊं, हमारी जो जनरल यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें जनरल यूनिवर्सिटीज में क्या है कि हम लोग जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर कोई अपॉइंट होता है उसको इमीडिएटली 4 कैंडिडेट पीएचडी के मिल जाते हैं इमीडिएटली। जबकि जो ये एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं या इस तरह की जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें ये सिस्टम नहीं फॉलो होता है। वहां पे अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट होता है तो उसको एटलीस्ट 3 या 4 साल तक कोई पीएचडी का कैंडिडेट नहीं दिया जाता है, तब तक और एक्सपेरिमेंटेशन वर्क में फिर एक कमेटी के समक्ष वो अपने आप को प्रस्तुत करता है, और वहां पे वो कमेटी अप्रूव करती है कि वेदर दैट टीचर विल बी पीएचडी कैंडिडेट और नॉट। तो ये जो है हमारे इंडिया में भी है, जो इन्होंने ये दिया है। एक मैं पढ़ रहा था कि स्पेसिफिक टाइम स्लॉट फॉर रिसर्च, नो। देखिए रिसर्च के लिए मैंने पहले बोला टीचिंग और एक्शन रिसर्च जो है जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना चाहिए कि इसमें रिसर्च करनी है और इसमें टीचिंग करनी है, नो, दैट्स नॉट लाइक दैट। दीज आर integrated activities, these are supplementary to each other, teaching and research, so there should not be any go hand in hand. जी थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है हर्षा मर्चेंट का, 1 मिनट ले लेते हैं यहाँ से। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, हर्षा मर्चेंट। प्लीज वीडियो ऑन करिएगा, अपना वीडियो ऑन करके कुछ। यस मैम प्लीज। नमस्ते नमस्ते। आपके जितनी बढ़िया हिंदी मेरी नहीं है, फिर भी मुझे थोड़ी बहुत आती है, तो मैं बोल रही हूँ कि सर हम स्टैंड आउट बीएड कॉलेज हैं और अभी बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड बीएड कॉलेज। एनी रिसर्चेस आर देयर दैट इंटीग्रेटेड बीएड कॉलेजेस आर मच मोर effective than stand out BEd college, or there is no particular or specific curriculum also given to us where we can come out of that, and there are no one to guide us okay, how to go about it, number one. Number two, just now you have answered कि there is no specific time slot, पर टीचिंग में से ही हमारे टीचर्स बेचारे ऊपर नहीं आते, वो रिसर्च करेंगे, रिसर्च की मेथोडोलॉजी भी उनको समझानी पड़ती है सर। हम ऐसे ही नहीं बोल देते। मैं क्या कहती हूँ, एक सजेशन कि ऐसा कीजिए, SY बीएड में 5 months की इंटर्नशिप होती है। let that children go to there and give them some kind of stipend, and let that time slot give to teachers. Now why you want them to work for this month, no guidance? This, I think this is not fair. But
आप है ना, पुरुष लोग है ना, आपको इतना घर का भी कोई काम नहीं रहता है, बनी बनाई थाली आ जाती है। इनको घर पे भी जाके काम करना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, गेस्ट को देखना पड़ता है। थोड़ा तो कंसीडर करो कि उनको रिसर्च के लिए टाइम दो। हम कोई ये नहीं मांग रहे हैं आपसे कोई फैसिलिटी, लेकिन आप थोड़ा इनको रिसर्च के लिए भी, आप 1 घंटा वो जाना चाहती है कहीं डेटा कलेक्शन को, तो दे दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? सिस्टम का क्वेश्चन है सर ये। नहीं, मुझे लगता है अनदर कि ये अनदर मेरे बच्चे को मैं रिसर्च करवा रही हूँ बीएड में, मैं उनके देखो कितनी क्वालिटी वाले मैं रिसर्च करवाती हूँ। मैं आपको रिव्यू के भेज सकती हूँ सर, आपको, ये सर को, संजय भाई को और तानिया मैम को, शुड आई सेंड? एंड यू सी एट बीएड लेवल ऑल्सो कितनी क्वालिटी वाले बना के रखती हूँ मैं, बिकॉज मेरे पास वो टीम है जो रिसर्च ओरिएंटेड है। जी मैम, नहीं बिल्कुल भेज सकते हैं मैम। थैंक यू, थैंक यू। मुझे लगता है ये जो है इनका पर्सनल एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। हमारे भी एक्सपीरियंस इस तरह के हैं। और जो रही बात इंटीग्रेटेड बहुत जल्दी हो जाएगा ये बोलना कि कौन सी स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन बेटर है नहीं है। जो शिक्षा नीति का जो मेन एम्फेसिस है वो ये है कि हम एजुकेशन पर जो है वो ज्यादा फोकस करें। तो उसके लिए और दीज इंस्टीट्यूशंस देखिए आर टू बी कन्वर्टेड, नॉट टू बी शट डाउन। कन्वर्टेड धीरे-धीरे मूव करिए और ये कोर्सेज भी शुरू करिए ताकि एक जो ये कोरोना के दौरान हुआ है, जिनके पास स्किल रीस्किलिंग एंड जिसको हम बोलते हैं कोरोना टाइम में कई लोगों की नौकरियां गई। क्यों गई? क्योंकि उनके पास एक ही फील्ड का नॉलेज था। जब वो चीज बंद होगी तो वापस बैठना, अगर बैठ के कोई और काम नहीं कर सके, लाइवलीहुड आ गया, वहां पे सबसे बड़ी जरूरत है कोई दूसरा स्किल, दूसरा नॉलेज होता हैव अर्न। सो NEP 2020 it is talking about skilling, reskilling and reskilling. So multidisciplinary education, it is also talking about they must have knowledge of different disciplines also. So it is talking about those these standalone institutions should be converted into those multidisciplinary institutions, and we should go for that, and that will be for the betterment of the students. But at this stage we cannot guarantee we can say that the standalone institutions are not better. No, that's not like that. But if multidisciplinary education institution will be there, they will really contribute more. They will contribute definitely more. Because variety of knowledge, variety of skills, variety of skills will be provided to the students. The second thing which she was saying about that research in BEd institutions, or there should be a stipend or something like that. I think teaching is social service, and there, once we have entered into teaching profession, it's my duty, moral duty to learn about things. It's not every time that any university or any college teach you. No. If I have entered the profession, I have to update myself on my own. It's not like that this through induction or through HRDCs or certain universities you will be acquainted. As if I do not know about research, I should go for learning of research process, how it is carried out, what are research skills which are developed within me. ये तो मुझे सीखना पड़ेगा अगर मैं टीचिंग में हूं तो। हाँ, अगर सही मायने में अगर टीचिंग करना चाहता हूं तो मुझे बात कोई जो है वो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं सिखाएगा। It is the zeal, it is the commitment, it is the dedication that will come from within the teacher, that I want to learn and I want to improve my quality of teaching and the works which I am performing in an educational institution. So these are the opinions. These may vary from people. These are the perceptions based on the experiences which we have received in our professional life. Yeah, thank you so much, sir. अब मैं चाहूंगी, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी
प्रोफेसर सत्येंद्र गुप्ता जी को कि वो हमें अपने विचारों से अनुगत करें और एक क्लोजिंग रिमार्क्स जो है इस सेशन का वो दें। प्रोफेसर सत्येंद्र गुप्ता जी। जी मैम साथ नमस्कार। ही साथ मैं सॉरी टू इंटरप्ट, साथ ही साथ मैं चाहूंगी प्लीज सारे पार्टिसिपेंट्स आप अपनी वीडियो ऑन कर लें प्लीज, एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर जुगनू जी। एम आई ऑडिबल? यस यस सर, सर, ऑडिबल। यस सर। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल, सुप्रभात। और सबसे पहले तो प्रोफेसर सूद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आई एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स योर नॉलेज, द नॉलेज शेयरिंग विद अस। और व्हेन वी टॉक अबाउट द रिसर्च, so I can quote today's session, what is the meaning of research? अभी संजय जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया था, उसका आंसर भी लोगों का आया है। सॉरी थोड़ी डिस्टरबेंस आ रहा होगा बैकग्राउंड से, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस साइड में, नेबरहुड में। तो जब हम टीचिंग की बात करते हैं, टीचिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट द रिसर्च। हम जब क्लास में पढ़ाते हैं, चाहे हम लोग बीएड के हों चाहे किसी भी स्ट्रीम के हों, तो वी आर नॉट सपोज टू फॉलो द वर्ड्स टू वर्ड विच आर रिटन इन अ पर्टिकुलर बुक। उसके लिए भी हम कई सारी बुक्स का रेफरेंस देखते हैं, अलग अलग रेफरेंसेस को यूज करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड आवर अंडरस्टैंडिंग, वी ट्राई टू मैनेज द नॉलेज कंटेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द रिसर्च। तो टीचिंग में तो रिसर्च इनहेरेंट है, वो तो ऑटोमेटिक आती ही आती है। When we give the assignment to the students, now you prepare the assignment or you give any seminar, you write any article, तो हम उनसे क्या कहते हैं, बेटा तुमने तो किताब से सीधा कॉपी करके ले आए हो। इसका मतलब क्या है, जब एज ए टीचर हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आप किसी एक या दो किताबों को ही पढ़ के और क्लास में सच पढ़ा दें, तो फिर उसके लिए आपकी जरूरत क्या है? फिर तो आपके ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड है, करस्पॉन्डेंस अवेलेबल है, वो यही काम करते हैं, किताब पढ़िए और एग्जाम दे दीजिए। देन व्हाट इज द नीड ऑफ अ टीचर? तो ऑटोमेटिकली रिसर्च इनहेरेंट होता ही होता है। अब बात ये आती है कि जब आप केसेस होते हैं, आप जब किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, तो हम चाहते हैं कि दुनिया के सभी लोगों को पता हो, देखो मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है। Here I would like to quote one journal which is published by the NCERT Primary Teacher. हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। उसको कई बार मैंने पढ़ा है, देखा है, तो उसमें स्कूल टीचर्स के बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स होते हैं इन विच दे शेयर द प्रॉब्लम, द केस स्टडीज एंड हाउ दे रिजॉल्व। और वो क्यों हम शेयर कर रहे हैं, क्या जरूरत है? भाई मेरी प्रॉब्लम थी, मैंने उस पर एक छोटा सा रिसर्च वर्क किया, चाहे एक्शन रिसर्च हो या किसी और तरीके से, और मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, तो मैं क्यों पब्लिश करूं उसको? व्हाट इज द नीड ऑफ द पब्लिकेशन? So then we want to communicate the whole world कि this is the problem maybe or might be faced by you, and you can also try to resolve that problem through which attitude or approach I resolved. If you are successful in the same manner, so then you also quote with the other persons कि देखो ये प्रॉब्लम थी, मैंने इसको ऐसे ऐसे रिजॉल्व किया, और वो सज्जन थे, उन्होंने इसको इस तरह से किया था। तो दीज आर द 2, 3, 4 एग्जांपल्स। तो एक हम पूरा एक सेट, एक हमारा फॉर्मूला सा बन जाता है कि देखो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम इज सब्जेक्टिव, सो देन यू कैन ट्रीट द प्रॉब्लम विद द अदर वे। सो दैट्स व्हाई द नीड ऑफ द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हम हर चीज इंटरकनेक्टेड है। देन व्हाई वी एम्फसाइज ऑन द रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। यदि मैंने कोई रिसर्च की है, मैंने उसको पब्लिश ही नहीं किया है, सो देन कोई दूसरा आदमी करेगा, फिर आप चीखते चिल्लाते रहोगे साहब ये तो मेरा काम था, उसने देखो एज सच कॉपी करके उसको मिल गया, उसने देखो पब्लिश कर दिया। देन वेयर इज योर क्लेम? आपने तो कहीं पब्लिश किया ही नहीं था ना। जब आपने पब्लिश किया ही नहीं है अपना रिसर्च वर्क, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो मेरा काम था? सो देन वी नीड द सर्टिफिकेट, देखो मेरा काम था, मैंने इस जर्नल में इस समय पब्लिश किया था। अब ये जो सेकंड पर्सन है, उसको कहीं से या सेम वर्क वो कर रहा है। एक बात हम लोग और कहते हैं, इसी में कनेक्ट करूंगा, एक रिसर्च वर्क आपने किया, सेम रिसर्च वर्क आपके पड़ोस में दूसरे टीचर ने कर लिया, दूसरे रिसर्चर ने कर लिया। सो देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्क?
तो यही कहा जाता है भाई थोड़ा सा आप चेंज करिए। सो आज का जमाना प्रचार का है, प्रोपोगंडा का है, मैक्सिमम सर्कुलेशन का है, तो इसलिए मुझे लगता है बहुत सारी साइटेशन इंडेक्सिंग वगैरह आ गई हैं, और हम चाहते हैं और थोड़ा सा मोदी जी से इसमें हमें सीखना पड़ेगा, छोटा सा काम करो लेकिन पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटो उसका। सो दिस इज द सेम प्रोसेस वी हैव टू फॉलो, कि आप छोटा सा रिसर्च वर्क करिए बट यू आर सपोज टू पब्लिश इन द एनी इंडेक्सिंग जर्नल। हाँ, एक इशू यहाँ पर जरूर है, अभी सर ने, प्रोफेसर सूद ने भी कहा है कि इट इज वर्किंग एट द लेवल यूजीसी। यूजीसी ने अभी बाउंड किया हुआ है कि आपको 2 पेपर कम से कम यूजीसी केयर में पब्लिश करना है, और यूजीसी केयर ऑटोमेटिकली इंक्लूड द स्कोपस पब्लिकेशन, सो दैट मे बी रिजॉल्व फ्रॉम द यूजीसी साइड कि पब्लिश तो करना चाहिए। मैं आई एम इन द फेवर ऑफ द पब्लिकेशन, कि आप काम कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं बताएंगे, यू शुड टेल द वर्ल्ड देखो ये मेरा टॉपिक है पीएचडी का, मैंने इसको ये रिसर्च किया, ये डेटा कलेक्शन किया है, बस बाउंडेशन इज रॉन्ग कि नहीं आप केवल केयर में ही करेंगे। अब उसके पीछे भी समझना पड़ेगा, उसके पीछे भी रीजंस हैं कि जहां तक मुझे याद है 2009 के पहले रूल नहीं था, उसके पहले भी आप पब्लिश करें ना करें वो आपकी मर्जी थी, लेकिन आपने किसी कॉलेज के जर्नल में पब्लिश करवा दिया और फिर क्लेम कर देखो मेरा पेपर तो पब्लिश हो गया था। आपने किसी लो सर्कुलेशन के जर्नल में पब्लिश कर दिया, जैसा होता है ना आजकल संजय जी, आपने देखा होगा सोसाइटीज वगैरह या कहीं ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट के इलेक्शन होते हैं, तो कभी भी आपको मेन नेशनल पेपर में उसका ऐड नहीं मिलेगा, एक लोकल पेपर में छोटा सा एक आ जाता है ऐड कि देखिए हमारी सोसाइटी का एक इलेक्शन हो रहा है, और जिससे दुनिया में किसी को पता ही नहीं चलता है। देन यू ऑल्सो फिल द कोटा कि देखिए मेरा कोटा पूरा हो गया, पब्लिश करना था, मैंने पब्लिश कर दिया। सो दैट्स व्हाई दिस इज द नीड ऑफ द रिसर्च वर्क। तो बहुत लंबी बातें हैं लेकिन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और संजय जी ने रिकॉर्डिंग शेयर की है, तो वंस अगेन वी कैन गो थ्रू द होल रिकॉर्डिंग। और प्रोफेसर सूद ने बहुत लंबी लिस्ट दी थी रेफरेंसिंग की, इंडेक्सिंग की, एंड हाउ वी कैन सर्च अ गुड जर्नल थ्रू दीज रेफरेंसेस। So once again, I would like to extend my thanks to Professor Gopal Thakur sir also. Through him, we could reach to Professor Sood. And thank you, Professor Sood, for sharing your knowledge and motivating us for future work. और डेफिनेटली पूरी टीम साथ में लगती है। रिसर्च वर्क अकेले का काम नहीं होता है, इसमें भी पीएचडी की हम बात करते हैं स्पेशली, तो देन हमारा एक रिसर्च स्कॉलर साथ में होता है, या हमारा सुपरवाइजर उसको गाइड करता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो एक टीम वर्क होता है रिसर्च में डेफिनेटली। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी सूद सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, चेन्नई के जर्नल का कोट किया था। तो एडिटोरियल बोर्ड भी इनडायरेक्टली आपको हेल्प कर रहा है कि हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर रिसर्च वर्क। जब सजेशन आते हैं कि नहीं आप इसको और इम्प्रूव करिए, इन साइट्स पे, इन पैरामीटर्स पर अपना पेपर को रिवाइज करके भेजिए, सो डायरेक्टली दे आर आल्सो हेल्पिंग अस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर रिसर्च वर्क। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया लंबा सेशन चला है, लगभग मैं देख रहा हूँ तो 2 घंटे होने वाले हैं। और दीपावली का काम सबके घर में चल रहा होगा, लेकिन फिर भी जुगनू खट्टर भाटिया मैडम ने लोगों को लगाया हुआ है कि आप अपना एनरिच करिए अपनी नॉलेज को, एकेडमिक फ्रंट पे भी आगे बढ़िए। तो थैंक्स टू ऑल, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर तानिया, डॉक्टर जुगनू खट्टर भाटिया, and again special thanks to Gopal Thakur sir and Professor Sood ji। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और चाहेंगे कि फिर आगे आपसे बात हो एक बार। बहुत अच्छे पॉइंट्स आज सामने आए हैं, और मुझे लगता है आप लोग वो सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम लोग यूजीसी तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं कि भाई देखिए ये आम जनता के सामने समस्या है, कृपया इनका समाधान करिए। थैंक यू सो मच सर। और सभी पार्टिसिपेंट से मैं कहना चाहूंगी कि फीडबैक लिंक जो है वो चैट बॉक्स में शेयर कर दिया गया है, तो प्लीज आप अपना फीडबैक लिंक जो है उसे सबमिट कर दीजिए। एंड नाउ एट द एंड ऑफ द program, on behalf of Council of Teacher Professional Development and Social Development and Research Foundation, it's my privilege to extend my vote of thanks towards our today's expert speaker and resource person, Professor Dr. Vishal Sood ji, and who, despite his busy schedule, has found
time to grace this occasion, and thanks for sharing with us some of best education and research practices. Thank you so much, sir. Next, our respected Professor Gopal Krishna Thakur, sir, President of SDRF. Thank you so much, sir, for your very thought-provoking and significant opening address. And I also thank our respected Professor Satyendra Gupta, sir, for sharing with us some of best education and research practice. And we all are inspired by your highly lively words. And I would like to express our deep gratitude and appreciation towards Dr. Sanjay Kumar, sir, Program Director, SDRF, and Principal of Saraswati College. Thank you, sir, for initiating these useful projects. And especially, I would like to express our deep gratitude towards Professor Tanya Gupta, ma'am. Thank you so much, ma'am. And especially, ma'am, सबसे ज़्यादा thanks कि real time जो problems हैं उनको आप सामने लेकर आई. Thank you so much for that.